is polling day. They have polled on 12th. Who is responsible for this? Can Election Commission can take this responsibility? And also Election Commission, misleading affidavit. They are saying 6 days to count one assembly segment. Is it fair? We were in paper ballot. It used to take 12 hours to 18 hours or maximum 24 hours. I contested in the first election, 1978, only paper ballot. It has come afterwards. Now, how can you justify, even with all these things, maximum 24 hours? It is very simple also. It is a simple slip on the top, name of the candidate, and also symbol. You want to segregate, it is not much time. And at the same time, you can count also, it is very easy. Just like currency denomination, you can segregate, you can count it within no time. Why you are lying to the Supreme Court? Why you filed this affidavit? Earlier, Government of India filed affidavit, wrong affidavit on Rafale. Ultimately, they filed one more affidavit saying that correct this grammar. Government of India don't have credibility. Today, Election Commission has lost its credibility and confidence and trust of the voters. Our demand is very clear. 23 political parties, not 1 or 2 political parties. We are all one. Ultimately, in the beginning, we said we want to go for paper ballot. But due to lack of time, we have changed our stand. We are asking VVPAT counting at least 50%. After 50% counting, there are discrepancies. How to act? Immediately you have to count total VVPAT polling stations, booths. Then only you have to announce results. Or again, if you refer all these things to Election Commission, it is fait accompli. We are very clear on that. Democracy, Election Commission has to protect. Now Government of India is instrumental in managing all constitutional entities. CBI, we have seen. ED, we have seen. Income tax, left and rights they are doing even today. All opposition states, they are having IT raids. Not even one state where BJP is enrolling. One function of BJP is ruling. What is the level playing field? Is it equal level playing field for all political parties? They have to answer now. Even Election Commission has to answer. They transferred all my officers, even Intelligence DG. Why you are not transferring IB? Intelligence Bureau. He is also conducting surveys. He is also doing political work. Why this type of discrimination? That means towards opposition parties you are behaving differently. Ruling party you are doing differently. Even my chief secretary they have transferred. Whom they have appointed? Questionable. Even co-accused of the YSR Congress party, they appointed as chief secretary. Is it right? Without consulting state governments, you are doing all these things. It is unwarranted. It is not correct approach. Save democracy. Independently, Election Commission has to act. They have spent 9,000 crores on VVPATs. By spending 9,000 crores, you are counting one ballot box. How can you, why you have invested so much of money? Where is the need for that? This is where people of this great country has to think. Intellectuals has to think. What we are asking, we are not asking any unreasonable demand. It is very reasonable demand. There are 14 to 16 tables in every counting station. At one time, within 2 hours time, they can complete, or maximum 3 hours time, they can complete this counting. It is very easy compared to earlier paper ballot. Now, why you are saying lie to the Supreme Court? Yesterday, I asked Election Commission, why you are saying like this? You are new for this commission. We are continuing in politics for the last 40 years. I know paper ballot, I know EVM,
Then I fought for VVPAT. Not today. People are accusing me that I have completed my elections because I may lose the election. That's why I came in. I am giving guarantee, not only guarantee, 200%, 1000% we will win. 4:30 a.m. people came. Why they came 4:30 a.m.? That is a determination. Not only determination, they are very angry on Election Commission of India and Government of India for misusing this type of things. So they came for voting with vengeance. This everybody has to understand. Ultimately, what we got it from Supreme Court, 1 to 5 votes to count. We are not satisfied. We are asking only simple solution. That simple solution, 50% of votes has to be counted. What Election Commission has filed affidavit, it is wrong, entirely wrong. It is misleading. So we want to go again with discussing with others and also our senior advocates in Supreme Court, either fresh petition or review petition. Ultimately, we wanted to place before this great nation. I am requesting all intellectuals. Recently, 65 officers, IAS, IPS, and also IFS, ex-service, they went to President of India. They questioned the impartiality of this commission. They demanded for action. Now everybody has to do this. Unless 50% of EVPAT has to be counted, and on the basis of that, results has to be announced. Or you don't have any right, again, ask us to go to regular writ or court disputes. That will take another 5 years' time. To save democracy, today is 128th birthday of Ambedkar ji. So all political parties, we are together. We will educate people. We will take to the knowledge of the people, and then ultimately, why BJP and its allies are opposing this decision? They have to answer now. If they oppose, why Election Commission is not acting impartially? Ultimately, we are left with court. Again, we will appeal to the court. We will ask Supreme Court to do justice, to save democracy. This is in brief. Other friends will explain. नहीं, थैंक यू, आई गॉट दिस विल वर्क. सबसे पहले तो मैं चंद्रबाबू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक मंच पे लगभग 70% इस देश के मतदाता रिप्रेजेंटेड हैं. पहली बात, और इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि हमें मतदाता पे विश्वास है, मशीन पे विश्वास नहीं है. क्योंकि जो मतदाता की वोट करने जाता है, किसको वोट कर रहा है वो तो उसको मालूम है, लेकिन जब वोट काउंट होता है तो उसको मालूम नहीं कहां काउंट हो रहा है. दोनों पहलू ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. पहली बात ये, मतदाता पे विश्वास, मशीन पे विश्वास नहीं. दूसरी बात, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जो मतदाता जिसको वोट करने जाता है उसी को वोट मिलना चाहिए. यही लोकतंत्र का मतलब है. इस पे रोक क्यों डाल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन इस पे रोक क्यों डाल रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चाहती कि वीवीपैट काउंट होना चाहिए 50% तक? उसका कोई मतलब होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए. आज के दिन क्या हो रहा है? 20-25% मशीनें काम ही नहीं करती. सफाई होनी चाहिए. आज के दिन क्या हो रहा है? 20-25% मशीनें काम ही नहीं करती. लोग सुबह 4 बजे तक वोटिंग करते हैं. लाइनें खड़ी, आपको मालूम है कि 5 बजे तक वोटिंग खत्म होनी चाहिए, और अगर एक 4 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक वोट करते हैं तो इसका निश्चित रूप से मशीन काम नहीं कर रही.
बटन एक जगह दबाओ तो वोट कहीं और जाता है। बिजनौर में हुआ। तो अगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसको नजरअंदाज करेगा तो फिर हमें कुछ और रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि यह आवाज मतदाता की आवाज है। दूसरी बात, अगर 70 से 75 मतदाता चाहते हैं कि वीवीपैट 50% काउंट होना चाहिए, तो ये तो मेजॉरिटी है ना। तो अगर मेजॉरिटी चाहती है तो चुनाव आयोग काउंट क्यों नहीं करता? रोक क्यों लगा रहे हैं? हम चुनाव आयोग को बता सकते हैं कि कैसे यह मशीन मैनिपुलेट होती है, हम बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मशीन चाहिए। 12 घंटे 24 घंटे चाहिए और हमें बताएंगे कि कैसे मैनिपुलेट हो सकती है। वो भी सुविधा वो तैयार नहीं है देने को। क्यों? और हमें इस बात का भी दुख है कि इन बातों को बाकी संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिए। ये हम देखिए, अभी रिजल्ट तो नहीं हुआ आउट, अभी तो सेकंड फेज है। हम क्यों आज आपके पास आए हैं? क्योंकि अभी सेकंड फेज चलने वाला है, और जो फर्स्ट फेज में हमने देखा है वो आपके सामने नायडू जी ने रखा है। और अगर हमें राहत नहीं मिलेगी और चुनाव और मशीन के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो उसके बाद रास्ता ही क्या है? कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हैं। इलेक्शन पिटीशन फाइल करो, कोर्ट में 5 साल वेट करो, उसके बाद चुनाव आयोग फिर दोबारा कहेगा मशीन का इस्तेमाल करो, वही गलत कारनामों के साथ फिर सरकार बनेगी और किसी को राहत नहीं मिलेगी। मतदाता वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ये हमें मंजूर नहीं है, देश की जनता को मंजूर नहीं है। हम यहां राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, किसी को मंजूर नहीं है। और अगर चुनाव आयोग फिर भी जिद करेगी तो फिर हम फैसला करेंगे इकट्ठा होकर हमें आगे क्या करना है। याचिका तो हम डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हम डालेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं देख सकती वहां जाकर के नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। वो तो हम देखते हैं ना, हमें मालूम है कि कैसे काउंटिंग होती है। 14 मशीनें, लोग अधिकारी खड़े हो जाएं, 2 घंटे में काउंटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम। और अगर चुनाव आयोग मतदाता का साथ नहीं देगा, चुनाव आयोग अगर मतदाता का साथ नहीं देगा और मशीन का साथ देगा, तो फिर तो वो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है उस देश का, उस लोकतंत्र का, जहां चुनाव आयोग मशीन का साथ दे और मतदाता का साथ नहीं दे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। इस देश के लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जहां भी हम लोग जाते हैं, सभाएं करते हैं, ईवीएम देख लेना।